जावेद जी सर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 28वें यौम तासीस में आप तमाम का खैर मकदम है। हम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो क़िराअत कलाम पाक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. میں ٹیکنیکل ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کا ترانہ پیش کریں. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، باب شہر علم ہے اردو زبان کا. علم و کمال فضل و شعر و شعور تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک. ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو، آزاد درسگاہ کی ہے یہ بھی جستجو. سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا، باب شہر علم ہے اردو زبان کا. غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو خیال ملا دو خیال سے. چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا، باب شہر علم ہے اردو زبان کا. فصل صدا بہار سے بستی بسی رہے، مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے. سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو
करे आसमान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। आइए अब मैं इज़्ज़त माब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब से दरख्वास्त करूं कि वो डिग्निटरीज़ के साथ मेहमानों के साथ शय नशीन पर तशरीफ़ लाएं। इज़्ज़त माब चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुमताज़ अली साहब, साथ ही साथ जनाब तारिक मंसूर साहब, फॉर्मर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जी फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर अली मशरफ जायसी साहब, OSD 1 शगुफ्ता शाहीन मैम, OSD 2 प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब, आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप शय नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। अब मैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning to all of you. Indeed, it's a great day and it's a privilege for me as Registrar of Maulana Azad National Urdu University that today we have assembled to celebrate our 28th Foundation Day with a wonderful program by inviting Honorable Chancellor Sri M. Sir and renowned economist Professor Tariq Mansoor Sahib, former Vice Chancellor Aligarh Muslim University. It's a day that we recall and we remember the contribution of our all faculty members, our staffs, teaching, non-teaching, academics, our administrator, our founder members, our former executive members, especially in the initial days, and those who have contributed off the record from the various ministries and UJC. That's why we are what today we call ourselves as the Maulana Azad National Urdu University. MANUU is a university with distinct identity. MANUU has been established to promote academic excellence through Urdu medium. And we have seen in the past that we tried our best, especially during the regime of the Honorable Vice Chancellor Syed Ainul Hasan, to achieve some of the targets that had not been achieved. Initially, when we moved the proposal for a School of Law, it was really a dream for us. And most of us had the opinion that it's getting approval from the Bar Council of India is not an easy task. But on this day, I congratulate the Honorable Vice Chancellor as well as our Chancellor Sri M. Sir that last year from the academic session 24-25, we started various level of courses as far as and established the School of Law, and the Attorney General of India, he visited our campus and inaugurated the moot court. It was really a big addition as far as our various flagship programs are concerned. We are working day and night to strengthen various schools, especially the science school, the vocational stream by starting various new programs and adding some new initiative as far as the direction of the UGC and the Ministry of Education is concerned. I know that all this cannot be possible without the help of our faculty members, our teaching staff, non-teaching staff, academic staff, and a large number of the contractual staff who had been contributing
to achieve our target. We are very thankful to all of you. We are very thankful to various associations who are contributing in different way. We take seriously their advices, we discuss, and we try to incorporate with the inclusive policy. It had been a serious challenge when the Honorable Vice Chancellor joined. A good number of backlog vacancies pertaining to SC and ST was pending, and we had a serious remarks from the Ministry of Education. I congratulate the Honorable Vice Chancellor that he took a progressive step, and today we have appointed more than 30 SC and ST faculty members by taking a progressive step, and they are part of our Maulana Azad National Urdu University. I welcome all of them. I am thankful that many of our colleagues, many of our retired vice chancellors like Professor Venkaiah ji and Professor Ghanta Ramesh Sahab, Professor Rama Madam, they had been guiding us. When we joined, NAC was due, and again we made our presence at national level in academic excellence by getting NAC A+ in the NAC evaluation and accreditation. It was something which gave energy to us to work further for the excellence. We have improved our ranking in NIRF, and there the contribution of Professor Rama Madam, she is Professor of Practice, must be acknowledged. I am thankful that we are working day and night to implement the policies, especially the guidelines that has come up through National Education Policy 2020 and the institutional development plan. The institutional development targets are again some new initiative that we are working in close coordination with UGC to achieve and all that. I am thankful to all of you for joining, especially for today. And we have eminent, the speaker, Professor Tariq Mansoor Sahib, as well as Chancellor Sahib. They will ponder on the thought and they will further give us the guidance. I am also thankful to our team members that they decided to invite the eminent personalities from Hyderabad who are closely associated or who have contributed for the promotion of the excellence or the promotion of art and culture and Urdu language, and they have close affiliation or affinity with our institution. On this day, we will give appreciation for them. So I welcome all of you. Many dignitaries are here. Welcome you all, sir. I welcome our own faculty members who are our part either at the headquarters or at various satellite campuses or off campuses, at various teachers training schools like CTEs, like polytechnics, ITIs, our regional centers, our sub-regional centers, and various offices with which we are linked to. I am also thankful to many of the officers in UGC and Ministry who are guiding us and helping us in achieving our target. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor, sir, to present a bouquet and welcome our Chancellor, Shri Mumtaz Ali Sahab. A moment in praise also there, sir. Now I request our Vice Chancellor, sir, to welcome Professor Tariq Mansoor, sir, former Vice Chancellor, Aligarh Muslim University.
Now I request Professor Ali Mashraf Jaisi sir to welcome the Vice Chancellor of this university, Professor Ainul Hassan sir. Thank you, sir. We have 3 book releases today. CUCS, the Center for Urdu Culture Studies, publishes a UGC care-listed journal called Adab-o-Sakhafat. This time we have a special number on Maulana Azad. I request the dignitaries to release the special number on Maulana Azad. I request Ahmad Khan Sahab and Sabir Ali Sivani Sahab to join us on the stage. जी सर मैं जी अब मैं प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो शय नशीन पर तशरीफ़ लाएं. आपकी लिखी हुई किताब इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा, इस किताब की रस्म इजरा भी आज के इस प्रोग्राम में होगी. बुक ले आइए प्लीज. CUCS के हमारे साथी डॉक्टर साबिर अली सीवानी साहब की किताब रोज़तुश शुहदा और करबल कथा का तक़ाबुली मुतालिया, इसकी रस्म इजरा भी आज हुई. मैं साबिर अली सीवानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शय नशीन पर आए. फाउंडेशन डे के इस मौके पर हमारी यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने अपनी खिदमत अंजाम दी और साथ ही साथ उर्दू अदब सखाफ़त के ज़ुमरे में जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको तहनीत पेश करना है, उनकी खिदमत का एतराफ़ करना है. मैं इस सेगमेंट के लिए अपने साथी डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप आएँ और अवार्डीज़ का ऐलान करें. बेहद शुक्रिया समी साहब. सबसे पहले जिन हजरात को तहनीत पेश की जाएगी वो हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले की तहनीत है, जिन्हें इस साल वजीफ़े हुस्न पर जिन्होंने सबुकदोशी इख्तियार की. सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा शकील अहमद साहब से, हालांकि वो बरसरकार हैं लेकिन वो अवार्ड लेंगे, तहनीत वसूल करेंगे हमारे एक गैर तदरीसी अमले नंद कुमार के बिहाफ पे. तो नंद कुमार किसी वजह से अपने आबाई मुकाम पर जाना पड़ा, वो आ नहीं सके, तो मैं IMC के शकील अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नंद कुमार की जो अवार्ड है वो आप लें. मैं गुजारिश करूंगा जनाब अजहर हुसैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. अजहर हुसैन साहब हाल ही में वजीफ़े हुस्न पर सबुकदोश हुए हैं. यूनिवर्सिटी अपने 28वें यौम तासीस के मौके पर उन सभी
عملے کا، ان سبھی اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، اور اسی کی ایک شکل ہے کہ آج یہاں پر پچھلی مرتبہ بھی کیا گیا تھا، آج یہاں پر بھی انہیں مدعو کیا گیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے پچھلے سال سبکدوش ہونے والے اظہر حسین صاحب۔ میں گزارش کروں گا عباس خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عباس خان صاحب کا بھی پچھلے برس یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ ہوا ہے۔ یونیورسٹی اپنے ان ریٹائرڈ ملازمین کو یہاں پر آج تہنیت پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے ہمارے تدریسی عملے کو۔ تدریسی عملے میں پچھلے سال وظیفہ حسن پر سبکدوشی اختیار کرنے والے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے، میں ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد جی وی سی صاحب خود وہاں پر آ رہے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا پروفیسر صداقت علی خان صاحب سے آپ آ جائیے سر۔ اب ایمیننٹ پرسن اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں ان حضرات کو یہاں پر اعتراف خدمات کے لیے دعوت دی جانی ہے جن کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے، جن کا شمار حیدرآباد کی نمائندہ شخصیات میں ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم دعوت دیں گے یہاں پر تھیٹر کی دنیا کی اہم شخصیت جناب محمد علی بیگ صاحب کو۔ پدم شری محمد علی بیگ صاحب ہندوستانی تھیٹر کے، آپ لوگوں کی تالیاں بجتی رہنی چاہیے، اس دوران میں اپنا تعارف بھی جو ہے وہ پورا کر لوں۔ ایڈورٹائزنگ اور ڈاکیومنٹری فلم میکنگ میں درخواست کروں گا کیا ایڈورٹائزنگ اور ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کی دنیا کا ایک اہم نام پدم شری محمد علی بیگ، جنہیں میڈیا گلوبل فیس آف حیدرآبادی تھیٹر کے نام سے پکارتی ہے، سلطان آف ایپیکس اور ماسٹر آف ریوائول کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ 2005 میں آپ نے اپنے والد تھیٹر لیجنڈ مرحوم خادر علی بیگ کی یاد میں خادر علی بیگ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا۔ خادر علی بیگ فاؤنڈیشن حیدرآباد میں بامعنی تھیٹر کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پدم شری محمد علی بیگ کی ان گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب اشر فرحان صاحب کو، لیکن جو اطلاع ملی ہے جناب اسلم فرشوری صاحب جو کہ اشر فرحان کے ماموں صاحب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اسی لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن آپ کی جانب سے یہ ایوارڈ وصول کریں گے پروفیسر نجم علی صاحب، نجم الحسن صاحب۔ پروفیسر نجم الحسن صاحب اشر فرحان صاحب کے بہاف پہ آپ ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جنہیں بعد از مرگ
यहाँ पर इतराफ़ खिदमात के लिए अवार्ड के लिए दिया जा रहा है। आपकी साहिबजादी यहाँ पर मौजूद है, मेरी मुराद है प्रोफेसर तकी अली खान साहब की। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर तकी अली खान जामिया उस्मानिया की साइंस फैकल्टी का एक नुमाया नाम है, जहाँ इन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर तवील अरसे तक खिदमात अंजाम दी। इनकी ज़ेर निगरानी 70 तलबा ने PhD की तकमील की और इनके नाम से 70 पेटेंट्स भी रजिस्टर्ड हैं। इन्हें अपनी इल्मी मसरूफियात के सबब दुनिया भर में सफ़र करने का मौका मिला, जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइंग खान भी कहा जाता था। साइंस के साथ साथ उर्दू ज़बान और अदब के लिए भी इनकी खिदमत काबिल ज़िक्र है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तकी अली खान को इनकी खिदमत के इतराफ़ में बाद अज़ मर्ग अवार्ड देते हुए खुशी महसूस करती है। आपकी साहिबजादी ये अवार्ड कबूल कर रही हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का शुमार मुमताज़ माहिर तालीम में होता है। 1989 में 18 तलबा के साथ आपने अपने तालीमी इदारों की शुरुआत की थी। आज शाहीन तालीमी इदारे जात अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर अब्दुल खदीर के कायम करदा इन इदारे जात में KG ta PG 20,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं और इन्हें 500 से ज़्यादा असातिज़ा की खिदमत हासिल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कई एक फ़ारिगीन आज शाहीन इदारे जात में बरसरकार हैं। इनकी तालीमी खिदमत के तरफ में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से अवार्ड दिया जा रहा है। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ पर स्टेज पर दावत दे रहा हूँ वो मेरे उस्ताद भी हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से। ज़ोरदार तालियों से आप खैर मकदम कीजिएगा। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम मोहताज तारुफ नहीं, जिंदा दिलाने हैदराबाद के क़याम का सहरा भी आप ही के सर जाता है। गुज़िश्ता 56 बरसों से आपकी इदारत में शगुफ़ा निकाला जा रहा है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद से यूनिवर्सिटी में दरसी कुतुब के तराजिम के लिए भी अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दी। उर्दू ज़बान और अदब के लिए आप जनाब की देरीना खिदमत के इतराफ़ में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अपने यौम तासीस के मौके पर आपकी खिदमत का इतराफ़ करती है। यूनिवर्सिटी की जानिब से अपने 28वें यौम तासीस के मौके पर जिन असहाब की निशानदेही की गई थी, जिनके खिदमत के तरफ करना था, उसमें मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन साहिबा का भी नाम शामिल है, लेकिन ख़राबी सेहत की बिना पर वो यहाँ पर हाजिर नहीं। मैं दरख्वास्त करूँगा आपकी बहू मोहतरमा प्रिया हसन साहिबा से कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी सास के नाम ये अवार्ड वो हासिल करें। मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन का जन्म इनकलाबी सरजमीन मेरठ पर 1940 में हुआ था। बचपन में ही तकसीम हिंद का मसला दरपेश था। इनके अराकीन ख़ानदान तर्क हिंद के इरादे से हैदराबाद में अपने अजीज़ों से मिलने आए और यहाँ पर गंडी पेट का पानी पिया तो फिर यहीं के हो रहे। आपकी खिदमत के एतराफ़ में यूनिवर्सिटी ये अवार्ड दे रही है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आइए अब मैं गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब से दरख्वास्त करूं कि आज फाउंडेशन डे के इस मौके पर वो अपने ख्यालात का इजहार करें। Chancellor Mr. Mumtaz Ali Sahab, Sheikhul Jamia Professor Sayyid Ainul Hassan Sahab, Registrar Professor Ishtiaq Ahmed, Chairperson Foundation Day Committee Professor Sayyid Alim Ashraf Sahab, Officer on Special Duty Professor Siddiqui Muhammad Mahmood and Professor Shagufta Shaheen, Muazzez हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देखिए 27वें फाउंडेशन डे पर मैं आप सब लोगों को
28वें फाउंडेशन डे पे मैं आप सब लोगों को दिली मुबारकबाद देता हूं और मेरे लिए बहुत फ़ख्र और मसरत की बात है कि मैं इसमें आप लोगों के साथ हूं। A foundation day for any university is a time to celebrate. It is a time to also retrospect and to make the future plans. The Maulana Azad National Urdu University has undoubtedly made phenomenal progress in the last quarter of a century. It had initially humble upbringings, but now it has got a graceful presence as a central university in the education sector. So my good wishes and congratulations on this 28th Foundation Day of MANUU. I duly acknowledge the leadership of your Chancellor and Vice Chancellor. I thank both of them for inviting me. The Chancellor, Mr. Mumtaz Ali Sahab, is a distinguished spiritual guide, orator, yogi, and educationist. He is conversant with the teachings of most major religions and advocates that humanity is one. He has initiated projects for social development in areas of education, health, skill development, and environment, especially tree plantation. Apart from India, he has centers in various other countries such as the United States of America, Germany, Switzerland, Finland. He has also authored several best-selling books, including his autobiography, Apprenticed to a Himalayan Master, a Yogi's Autobiography. The Vice Chancellor, Professor Ainul Hassan, is known to me since many years, both personally and professionally. I know him as a Vice Chancellor of MANUU and as an academic colleague, as a renowned scholar of Central Asian and Persian studies at JNU, who has worked for the last 30 years for the globalization of languages, literature, and culture by doing comparative studies. He is very much suited because of his interest in Persian, Urdu language, poetry, music. He is very much suited to carry forward the mission of MANUU. Coming to MANUU, the academic standards maintained by the teachers and students of MANUU in several schools of studies, departments, directorates, and centers are commendable. Your satellite campuses in Lucknow and Srinagar and regional and sub-regional centers of distance education, ITIs, polytechnics, teacher education centers, and Urdu model school in cities and states across the length and breadth of the country forge a strong Urdu network. The results of the concerted efforts made by MANUU faculty and administration are very obvious for all to see and appreciate. Coming to the promotion of the Urdu language. देखिए उर्दू जो है वो किसी ख़ास इलाके की या किसी ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं है, ये हम लोग सबको समझना चाहिए। वो पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। हर हिंदुस्तानी इस बात को तस्लीम करता है कि इस मुल्क की तहजीब और विरासत में उर्दू की बहुत बड़ा हिस्सा है। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। Urdu is an Indo-Aryan language and one of the 23 national languages of India. It is spoken by more than 170 million people. Most linguists agree that Urdu is an amalgamation of Persian, Arabic, Khadi Boli, Brij Bhasha, and other indigenous Indian languages. Both Punjab and Deccan have played an important part in the development of the Urdu language. अब कहाँ से स्टार्ट हुई इस पर कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली से स्टार्ट हुई, कुछ लोग कहते हैं डेक्कन से इसका ओरिजिन हुआ।
Amir Khosrow, Guru Nanak, Sant Kabir, Sant Namdev, Gyan Shaivar, and many others used Urdu in their poetic and religious composition. Urdu and Hindi share a common vocabulary base, grammar and phonology. Urdu is interwoven with the ethos of India and is the basis of the beautiful Ganga Jamuni Tehzeeb that truly represents India's composite culture. In fact, British promoted Urdu or Hindustani to counter the effect of the Persian language, which was the royal language of the Royal Zuban or the Mughals. Urdu, in fact, was considered more Indian and the Persian language was more foreign. Both Hindus and Muslims spoke the same language, Urdu, in the 19th century. What was political, to start with, ultimately became the harbinger of a remarkable cultural synthesis. It was not Urdu, but Hindavi that was patronized by the great Sufi saints Sheikh Nizamuddin Aulia, Ali Qalandar Panipati, and others. The United Nations has declared Urdu as an international language, and Urdu is now a global language. Although Urdu bears its origins in the medieval times, today it is nothing short of a global phenomenon. The subcontinent was the breeding ground of this language written in broken script, aptly called Rekhti. Surviving its ebbs and flows, today embraces the 21st century with grace. The advent of social media, artificial intelligence, and machine learning have only reaffirmed, refreshed, and re-established the relevance of Urdu. No longer confined to the subcontinent, it is indeed a global language with cross-border outreach. Even those who never had a formal training in Urdu can easily learn Urdu pronunciation, script and grammar online. देखिए मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं, वो पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी कभी फॉर्मल लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं हुई उर्दू लैंग्वेज में, but she knows Urdu so much. Now she has learnt Urdu by self-study. And now it is so much easy because of these tools which we have to study at home. The work done by organizations like Rekhta are appreciable. It is heartening to see that it underscores the fact that Urdu should not be associated with particular religion. We know that in the Jashn-e-Rekhta festivals in Delhi, London or Dubai or anywhere else, more than 2/3 of the Urdu lovers are not exactly Muslims. Urdu has always been interwoven with the fabric of the popular culture in India, and it is proven time and again. ठीक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोग 2 अवार्ड इंस्टीट्यूट किए थे जब मैं बीसी था, एक सर सैयद इंटरनेशनल अवार्ड और एक सर सैयद नेशनल अवार्ड. तो 2018 में यूनिवर्सिटी ने ये सर सैयद नेशनल अवार्ड संजीव सराफ को दिया था, वो खुद आए भी थे रिसीव करने उसको. तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया रेख्ता ने उर्दू के प्रोपोगेशन में. एक और मैं एनेक्डोट आपको बताऊं कि नवंबर 2019 में मैं यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा था, तो उसी फ्लाइट पे संजीव सराफ भी जा रहे थे, तो मिल गए इंसिडेंटली. इट वाज इंसिडेंट दैट आई मेट हिम ऑन दिस एयरक्राफ्ट. तो बोले आप जा रहे हैं, आप जो है कल जो है हम लोग रेख्ता का न्यूयॉर्क चैप्टर जो है वो इनॉग्रेट करेंगे, आप उसमें ज़रूर आइएगा. ही इन्वाइटेड मी. तो नेक्स्ट डे मैं गया, मेरे फ्रेंड जिनके साथ में रुका था उनकी वाइफ को ही मैं ले गया. वो वहाँ पे हार्वर्ड हॉल में हुआ था मैनहट्टन में. तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन दे वर नॉन मुस्लिम्स, और वो अमेरिकन्स भी थे, इंडियन डिप्लोमेट्स भी थे, उसमें कौंसल जनरल भी थे जो इंडिया के न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे. तो ये जो है इसके उर्दू के शौकीन लोग जो हैं वो हर कल्चर से, हर रिलीजन से, हर मुल्क में हैं. उसमें जावेद अख्तर साहब चीफ गेस्ट थे जो पोइट हैं एक्चुअली, उसमें उन्होंने बुलाया था. अब हम लोगों को जो है और लोगों से भी सीखना चाहिए कि हम ज़बान जो है वो किस तरह से ज़िंदा रखें. अब देखिए जो हेब्रू लैंग्वेज है वो क्यों ज़िंदा है. ज्यूस तो माइनॉरिटी में हर कंट्री में, इजराइल के अलावा हर कंट्री में माइनॉरिटीज़ में रहे हैं वो हमेशा, लेकिन वो जो है अपनी ज़बान को ज़िंदा इस तरह से रखते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते हैं घर में वो ज़बान. इस ज़बान आपको ये माना जाएगा आपको ज़बान तब आती है जब आप उसे पढ़ना और लिखना जाने.
सिर्फ बोलने से नहीं मान सकते हम कि आप उसको जानते हैं उसको। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है उसको उर्दू को प्रोपेगेट करें। मैंने बताया जैसे सेल्फ स्टडी करके अपने बच्चों को भी घर में पढ़ाएं अगर फैसिलिटीज़ नहीं है। Today, as Indians, both Hindus and Muslims must nurture and promote Urdu just like parents nurture their children. It belongs to both of us. Our film dialogues, lyrics, TV serials, music bears testimony to the fact that Urdu is an indelible part of our lives. Apart from promotion of Urdu, MANUU should also work to promote diversity and inclusiveness, as these are important for India's global image. Policies should be such that diversity flourishes. Unity in diversity is our biggest strength. Inclusive governance is also important for India's global image. This is the defining difference between countries such as India and China. MANUU should also promote India's relations with the Islamic world, especially the Gulf countries. In the last 10 years, India's relations with the Islamic world have improved a lot. We have got very good relations with Indonesia, very good relations with Egypt. The president of Egypt was chief guest 2 years back in the Republic Day celebrations. And now India has got very good relations with the UAE, Saudi Arabia, and other Gulf countries, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain. Why India's Hyderabad का एक special relationship है Saudi Arabia से और Gulf countries. Because before ये तेल निकलने से पहले, oil and gas exploration से पहले, हैदराबाद से बहुत हेल्प जाती थी सऊदी अरेबिया हज के लिए और हाजियों के लिए, और हैदराबाद वहाँ पे मक्का में हज हैदराबाद हाउस भी था। तो एक जो है वो स्पेशल एफिनिटी है हैदराबाद की, ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया से। तो मानू को इस में काम करना चाहिए। इंडिया रिलेशन विद द गल्फ कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम रीजंस। तो 9 million Indians they work in the Gulf, 3.5 million in UAE and 2.5 million in Saudi Arabia and in Qatar and Bahrain and other countries also. So that is one. Secondly, 40% of India's energy needs, they are from the Gulf countries and from Iran. Third is that 55% of the India's foreign exchange remittances, they are from the Gulf. 20% from UAE, 15% from Saudi Arabia. And this is a huge amount because the total remittances last year, they were $126 billion. Not 126 million, but $126 billion. So 55% of the remittances, they are coming from the Gulf. Earlier, India's relations to the Gulf were confined to simple trade oil relations, but now they have expanded into strategic areas of defense cooperation, anti-terrorism, cyber security, organized crime, and sea piracy. MANUU can collaborate with Gulf universities, especially in the fields of Islamic studies, theology, philosophy, languages, apart from other things. And as I have already mentioned, Hyderabad is a special relationship. Dear friends, MANUU's academic community comprising students and teachers has proven that Urdu is not a hindrance in their progress. A language popular for its poetry is also fit for acquiring modern scientific knowledge and service to the society in all walks of life. Enhancing academic output and graduate employability should be the universal objective for all. The manner in which MANUU caters to Urdu medium education in subjects like computer science, social science, arts, humanities, and mass communication is marvelous indeed. Together with such universal goals of higher education like equity, accessibility, and inclusivity, you have been adhering to the values of reaching to the underprivileged, empowering the girl students, and maintaining campus sustainability. Any visitor to your premises cherishes the visuals of ancient rock formations,
and the natural beauty you have preserved. With the advent of COVID-19 pandemic, the academic community the world over has learned to utilize the nuances of technology-based research and education. Blended learning with e-resources is not a stopgap resort for a difficult situation, but a novel teaching and learning technique that is here to stay. We must learn to adapt and expand ourselves in these realms. You have made effective use of the IT revolution, and the popularity of your Instructional Media Centre's YouTube channel on Urdu e-content is praiseworthy. You must enrich your repository of digital resources by lawfully acquiring recordings of recitals and performances by veteran Urdu schools from the archives of Doordarshan and All India Radio. I take this opportunity to felicitate all of you for your academic excellence, innovation, and research. The role of teachers is pivotal in shaping the future of the university and the nation. A true teacher delivers with the utmost sincerity and commitment, not only the curriculum in classroom, but inspires and instills precious life lessons and values to the students. I urge every teacher here today to become a role model and the moral compass for these students. My dear students, MANUU students are dear to our heart. On the occasion of your 28th Foundation Day, I exhort you to nurture big dreams, set lofty goals, and work hard in nation building. To the students, I always say that you cannot become a good doctor or a good engineer or a good linguist, or first you have to become a good human being. And in your life, always use your common sense. Don't be guided by others. That somebody has said this, I'm going to do this. Because he may be telling something out of his own vested interest. So use your own common sense and your own judgment in taking the decisions. You carry the hope of not only your family and community, but also the nation at large. Success is an outcome of diligence, confidence, and patient perseverance. There is no shortcut to success. For the youth of the 21st century, the world is full of opportunities. Explore them. But it's also full of evil temptations. Overcome them. Make use of social media wisely. Make use of the social media wisely. Set higher aims with your sheer willpower and righteous guidance. Remember, change towards modernity should not be resisted, but firmness in ideas should not be compromised. With these parting words, I once again congratulate you on this occasion and thank you for having me at this ceremony. I extend to you my best wishes for all success and good outcomes. मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके इस इदारे के साथ हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। बेहद शुक्रिया सर। अब मैं इज़्ज़त-माब चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी श्री मुमताज़ अली साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस मौके पर वो अपना खिताब पेश करें। Assalamu alaikum and namaskar to all of you. This 28th Foundation Day, हमारी उर्दू ज़बान इतनी साफ नहीं है कि मैं 10 मिनट 15 मिनट उर्दू में बोलूं, तो अंग्रेजी में बोलूँगा। On this 28th Foundation Day of MANUU, many of the things which I wanted to say have already been said by the previous honorable speaker, Professor Tariq Mansoor, former Vice Chancellor of IMU. As the Chancellor,
which, as you know, is mostly an honorary job. As a chancellor, I have to say a few things. 1, 2, 3, 4. 1. This is founded by Maulana Abdul Kalam Azad. Well, he was a Maulana. He was also very interested in stretching the boundaries of knowledge to situations which are really free and liberal. Like the last name which was given to him, Azad, did not belong to him. It was added on. Like the name of Ramananda Sagar. Sagar was added on. His name was Ramanand Chopra. So Azad was added on. Which means this Azad is an important point to note, teachers, students, all of you. While your personal faith and personal religion are ours, our own. When it comes to intellectual understanding, do not allow any barriers to come between us and understanding. Ilm is a word, it's an Arabic word, knowledge. So it is on record as one of the sayings of the Prophet Muhammad himself, may peace be on him, that when you seek wisdom, seek for it even as far as China. I'm not saying we should go to mainland China now, but you know what I mean. It's a figurative speech saying that expand your knowledge however much you want, and so on. I'm sorry, I forgot to mention the names of other dignitaries on the stage and also the dignitaries who are in front of me, and the professors, staff, and the teachers and the students who are in front of me. Sorry. So keep this in mind. This is especially addressed to the students, that do not allow anything to condition your knowledge. Your personal faith is one thing, keep it. There's nothing wrong with that. But when it comes to knowledge, unless you study, you will not even know what the other point of view is. We know only our point of view. We should also discuss other points of view. So that's one thing. And I think our Honorable Vice Chancellors and the Registrar and all the staff and administration, they are working hard to bring this about in many ways. You know, and you will be proud to know that we in this university now also have a law department. When the law department was opened and inaugurated, we had invited the Attorney General to come. So one of the things I said was, while law is law, please remember the words of Jesus Christ, that the law was made for man and not man for the law. And therefore, whatever be strictly legal, put a little bit of compassion into it. Compassion is a very important part of our life. Without compassion, everything becomes merely give and take, business, calculation. But compassion is the main thing in the heart. So today we have a legal facility. I were somewhere in my mind, I may not be there after some years, somebody else might come. I have this vague seed of thought in my mind that we should also have a medical facility. I don't know how, we don't know how, but perhaps we could work towards it, to have a wonderful medical facility here, because a doctor is as respected as a religious teacher, because he cures you of bodily ills, while the religious teacher cures you of your spiritual ills. So this is the second. Third, I want to say, we tried very hard last time, as I promised in one of the functions, to bring the Honorable President of India for a convocation. It did not work out due to various reasons, practical reasons of time and availability and so on. We are still working on it, and I hope the next convocation, provided Vice Chancellor Sahab and others agree, we should still try and get the President of India to come here and inaugurate and take part in the convocation.
Apart from that, I have nothing much to say. Thank you very much for inviting me, sir. In spite of my busy schedule, but I will never miss the opportunity of coming to MANUU, however busy I am. Thank you very much. Shukriya. Salam. Namaskar. Thank you, sir. मैं कल्चरल क्लब के स्टूडेंट्स और साउथ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में जिन स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिले हैं, मेराज साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टूडेंट्स के साथ शय नशीन पर तशरीफ़ लाएं एक फ़ोटो के लिए। मेरा आप अनाउंस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। साउथ ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में जो बेंगलुरु में हुआ था, उसमें हमारी स्किट की टीम, प्ले की टीम को 3rd प्राइज मिला था और माइम की टीम को 2nd प्राइज मिला है। नाउ वी हैव क्वालिफाइड फॉर नेशनल, which is going to be held at Amity University, Noida. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं बच्चों के इस अचीवमेंट के बारे में कुछ बताऊं। आज से ठीक 2 साल पहले इज़्ज़तमाब वाइस चांसलर साहब ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कल्चरल एक्टिविटी सेंटर की बुनियाद डाली और उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में उस एक्टिविटी सेंटर के बच्चे न सिर्फ साउथ ईस्ट जोन में जो है एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे, बल्कि वो नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। मैं इज़्ज़तमाब वाइस चांसलर साहब को और पूरी जो है मानू की जो कल्चरल क्लब की पूरी टीम है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। इज़्ज़तमाब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब से सदारती खिताब की दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन। Dignitaries on the dais and off the dais, our beloved Chancellor Mumtaz Ali Sahab, a very good friend of mine, Professor Tariq Mansoor Sahab, a sagacious friend, and of course, host of colleagues, girls and boys. Now, first of all, we must pay tributes to the founding fathers of this university, because foundation was very strong. Therefore, we are here today. And as you know, in the reverse order, there is a different picture. My Persian colleagues are sitting here, they will guide me. There is a poetry, Khishte Awwal, in a negative form. Khishte Awwal chun nehad mein maar kach, ta suraiya meera sad diwar kach. पहली ही ईंट जो रख देता है मेमार गलत, अर्श तक उठती चली जाती है दीवार गलत. So what we see that, okay, Khishte Awwal was perfect, absolutely in place, and therefore we are having this galaxy today.
And I must congratulate 28th Foundation Day. All of you have contributed a lot to the development of this university. Now, as mentioned by our Chancellor, really a learned teacher. And during the course of his stay, I have learned many things, particularly how to remain calm and cool. This is very important for your good health. And that's how issues are there. Every now and then, issues are cropping up. How to handle these issues. There you have, a formula, which I'm not going to share with you. So these things are important in our lives. Luckily, Professor Tariq Mansoor agreed. Last time also I insisted, but somehow he couldn't make it. This time we are grateful to him that he accepted our invitation. Now he is here. His father is a known academician. He was visiting professor of so many universities across the seas. Very, very. And Miranese says, Beta wahi qadam ba qadam ho jo baap ke. What we see today. I'm really grateful to you, Professor Tariq Mansoor. Now, as mentioned by our Chancellor, that what we need today, we need not a hospital, but a medical college. And I know that our Chancellor is running a medical college in Karnataka. I don't know whether he would be able to extend this facility to MANUU campus. But we do expect, and we will rally behind his endeavors. We assure you, sir. Now, my task is very limited. You are more responsible. If you put your heads together, you can achieve anything. And I have seen over a period of time, it was not individual effort. Rather, it has been a collective effort. And on the basis of this collective effort, we could really invite others. Those even sitting across the table to be part of our academic life. Now, I'm not here to deliver a long speech, otherwise, I'm a teacher, I can go on speaking. But to end up, I'm also not a born poet, but somehow, in line with poets, great. They are great, I'm a small fry, But I am in the queue, to suggest something, on the basis of my own experiences, what we see today in and around. I must recite a poetry. This is the best occasion, in fact. शक्ल वो क्या शक्ल है जो रूनुमा होती नहीं. जैसी साहब है जी. शक्ल वो क्या शक्ल है जो रूनुमा होती नहीं, आईने के सामने भी आईना होती नहीं. मैं हैदराबादी फ्रेंड्स आर सिटिंग हियर. शक्ल वो क्या शक्ल है जो रूनुमा होती नहीं,
आईने के सामने भी आईना होती नहीं, दिल तो वो भी है जो हो जाता है गैरों पर निसार। दिल तो वो भी है जो हो जाता है गैरों पर निसार, जान वो भी है जो अपनों पर फिदा होती नहीं। दिल तो वो भी है जो हो जाता है गैरों पर निसार, जान वो भी है जो अपनों पर फिदा होती नहीं। दर्ज करवाओ शिकायत दूसरों के नाम से, दर्ज करवाओ शिकायत दूसरों के नाम से, वो खता करते रहो जिसकी सजा होती नहीं। दर्ज करवाओ शिकायत दूसरों के नाम से, वो खता करते रहो जिसकी सजा होती नहीं। गोशे तुर्बत में क्या जाकर करे रोशन चराग, गोशे तुर्बत में क्या जाकर करे रोशन चराग। एक वही ऐवान है जिसमें हवा होती नहीं। गोशे तुर्बत में क्या रोशन करे जाकर चराग। आखिरी शेर सुनिए कि जेरे अबरू, ये आईब्रो को अबरू कहते हैं, जेरे अबरू, काज़मी साहब, जेरे अबरू एक पर्दे ने बचा लिया अबरू। जेरे अबरू एक पर्दे ने बचा लिया अबरू। ये नहीं होता तो आंखों में हया होती नहीं। I hope with this, I mean, even those who have not seen MANUU through their naked eyes, they will understand what MANUU is. And I'm sure with this pace of work, with this pace of understanding, you can go to any height. And I'm confident that our students, our teacher, our staff, they all together will move forward. और ये कारवां अपनी उस मंजिल पर पहुंचेगा जहां लोगों को एक बार ताज्जुब तो होगा कि ये यहां तक कैसे पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने दिल से लगा के रखेंगे। देखिए, एएमयू वाले काफी जज्बाती हो जाते हैं, मानू वालों के जज्बात कहाँ हैं? जरा सा एएमयू के जज्बात की तरह अपने जज्बात को भी इस यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपके इतनी अलुमनाई एसोसिएशंस वर्ल्ड में हो जाएंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। और इसी के साथ साथ जहां हमारे साथ गम है वहां खुशियां भी हैं। गम भी है जरूरी, खुशी भी जरूरी है। अपनी खुशी को जिस हद तक मना सकते हैं उसके लिए दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, जरूर कीजिए। मेरी आपके साथ दुआ है और इस सेलिब्रेशन को हमेशा याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी साहब से हदिया तशक्कुर पेश करने की गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, इस खुशगवार फरीज़े को मेरी जिम्मेदारी बनाने के लिए। इज़्ज़त माब चांसलर साहब, मोहतरमुल मकाम वाइस चांसलर साहब, आज की हमारी इस महफिल के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फार्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, OSD 1 प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन साहिबा, OSD 2 प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, यूनिवर्सिटी के तमाम डीन, डायरेक्टर्स, असातिज़े कराम,
तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खुशगवार फरीज़े के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया, जिसकी तौफीक से हम यूनिवर्सिटी के इस 28वें यौम तासीस को, फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट कर सके, मना सके। उसके बाद मैं अपने चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसियत से इस तनाजुर में कि हमारे चांसलर साहब का पैगाम भी जोड़ने का पैगाम है, और ये पैगाम हिंदुस्तान की धरती पर सदियों से दिया गया। सर, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि किसी एक मुरीद ने हज़रत फरीदुद्दीन गंजशकर को एक कैंची दी। गरीब मुरीद था, उसके पास कोई चीज़ नज़र पेश करने के लिए नहीं थी। कभी कहीं से उसे एक कैंची मिली तो उसने अपने शेख, अपने पीर की खिदमत में नज़र के तौर पर वो कैंची पेश की। तो हज़रत ने उससे फरमाया कि ये नज़र मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे देना है तो मुझे सुई ला कर दो, मैं जोड़ने का काम करता हूँ, काटने का काम नहीं करता हूँ। दरअसल यही मिशन हमारे वाइस चांसलर साहब का है। मैं आज की 28वें यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी शिरकत के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए, आपके पैगामात के लिए, जो हमारे दिलों से बेहद करीब है, दिलों से बेहद करीब हैं। इंसानों को बाहम जोड़ने का काम, इंसानों की खैरखाही और भलाई का काम, दरअसल यही इंसानियत है, यही वो खिलाफत है जो हमें तफवीज़ की गई है कि हम लोगों की गमगुसारी करें, उनकी अश्कसूई करें, उनकी हमदर्दी बरतें। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है। आपका फरमान है कि इंसान को ज़मीन की तरह होना चाहिए, कि उसमें हर गंदी चीज़ डाली जाती है मगर उससे निकलने वाली हर चीज़ अच्छी होती है, पाकीज़ा होती है। हम नापाक चीज़ ज़मीन में डालते हैं मगर जो उससे बरामद होती है वो पाकीज़ा होती है। मैं अपने चांसलर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी सरपरस्ती का, और मानू के लिए उनकी खिदमत का जो है भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस बाबे शहर इल्म के निगहबान आज़म और निगहबान अव्वल अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इज़्ज़त माब आली जनाब सैयद ऐनुल हसन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी क़यादत में, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरपरस्ती में उर्दू ज़बान व अदब का, इल्म व फ़न का, तहज़ीब व सक़ाफ़त का ये कारवां रवां है। मैं दिल की गहराइयों से अपने वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का इजहार करता हूँ कि जो माहौल सर ने बनाया है, जो लोगों में एतमाद पैदा किया है, अपने सबऑर्डिनेट में, अपने ज़ेर निगरानी काम करने वालों में जो एतमाद पैदा किया है, जो भरोसा उनके अंदर जगाया है, और जिस तरह लोगों की बात सुनने में और उनकी ख्वाहिशात और उनके मुतालबात पर अमल करने में जैसी पेशकदमी की है, बिलाशुबह ये मानू के लिए बेहद मुबारक है। मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम इनायात के लिए जो आप मानू पर, मानू के स्टाफ पर आपकी रही हैं। मैं इस मुनासबत से एक एमयू एलुमनाई होने की हैसियत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब का, कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी कलील मुद्दत में हमारी यूनिवर्सिटी के मुतालबे को आपने कबूल किया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आप भी इस यूनिवर्सिटी के तरक्की में, इसके तक़द्दुम में, इसके आगे बढ़ने में बराबर के शरीक हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तशरीफ़ आवरी का और इस पुरमग़्ज़ खिताब का जो उन्होंने उर्दू के हवाले से हमारे सामने पेश किया। मैं अपने रजिस्ट्रार साहब, फ़ाल, मुतहर्रिक और शब-ओ-रोज़ कारगुजार अपने रजिस्ट्रार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। OSD 1 प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं OSD 2 सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब का और फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कमेटी के तमाम मेंबरान का, बिलखुसूस प्रोवोस्ट बॉयज़ प्रोफेसर शाहिद रज़ा साहब का, प्रोवोस्ट गर्ल्स डॉक्टर समीना बासु साहिबा का, डॉक्टर प्रोफेसर फरियाद साहब का, प्रॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब का, जिन सब के ताउन से हम आज के इस सेलिब्रेशन को पाए तकमील पर पहुंचा सके। और जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम का बड़ा छोटा हिस्सा है,
जो प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा है उसकी तैयारी में सैकड़ों अफराद जो है किचन में जो है लगे हुए हैं। तकरीबन 3,500 लोगों का लंच तैयार किया जा रहा है इसी कैंपस में। तो जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी DSW टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो गुज़श्ता एक हफ्ते से शबो रोज जो है हमारी इस कमेटी के साथ लगी हुई है, उनके ताउन में लगी है। कल्चरल एक्टिविटी सेंटर के इंचार्ज जो है उसमें डॉक्टर मिराज साहब का और उनकी पूरी टीम का और कल्चरल एक्टिविटी सेंटर से लगे हुए तलबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम असातिज़े किराम और साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में ताउन देने वाली IMC की टीम है, इंजीनियरिंग सेक्शन की टीम है, स्टेट सेक्शन की टीम है और यूनिवर्सिटी के तमाम जो शोबे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया है, अहम रोल अदा किया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया और खुसूसियत के साथ मैं उन मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी दावत पर यहाँ से तशरीफ लाए, जिनमें पद्मश्री मोहम्मद अली बेग साहब और तकी अली खान साहब के बिहाफ पर उनकी बेटी और उनके दामाद तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और एजुकेशनल मूवमेंट चलाने वाले, एक अजीम एजुकेशनल मूवमेंट चलाने वाले हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये दरअसल आपके कामों का ये सिर्फ एतराफ़ है। दरअसल बुनियादी तौर पर उसके लिए आपके कामों के जिक्र और बयान के लिए एक इतना ही बड़ी गैदरिंग और इतना ही बड़ा प्रोग्राम चाहिए जिसमें तफसील से आपके कामों को बयान किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुसूसियत से शगुफा एक ऐसा पर्चा है कि जिसको मैं अपने बचपन से जानता हूँ। मैं अपने दौरान तालिब इल्मी जो है मेरे घर में ये पर्चा आता था तो मैं उनको सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लोगों को गुस्सा दिलाना बड़ा आसान है, लोगों को गम पहुंचा देना बड़ा आसान है, मगर लोगों के होठों पे मुस्कुराहट लाना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुश्किल काम जो है वो गुज़श्ता 40 सालों से आप कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जिन हजरात का मैं नाम नहीं ले सका हूं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। इस मुफस्सल शुक्रिया के बाद मैं IMC मानू की टीम से दरख्वास्त करता हूं कि नेशनल एंथम पेश करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जी, स्टाफ के लिए लंच गेस्ट हाउस में सर्व किया जाएगा।